So let's continue. We are going to continue the problem set first because in the previous session we had already studied about the question number first to 6. So now we are going to continue with the problem number 7. Here in this figure we can watch that is in triangle ABC, D is parallel to AB and that is given A between D between C, B between E between C also. And AD equal to 5, DC equal to 3 and BC equal to 6.4, then we have to find out the length of B. तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ B. आपको यहाँ पर दिया गया है AD equal to 5, DC equal to 3 and whole BC equal to 6.4. So how can we find that is B? So simply we know that we all are familiar with the BBT theorem, and in the BBT theorem we know that D parallel to AB, it means this point D and E divide side AC and the BC in the equal proportion. So that's why we can write that is AD upon DC equal to BD upon C. तो पहले यहाँ पे लिख दें. So first of all we have तो पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा. If BC equal to 6, then suppose B equal to X, then we get C equal to 6.4 minus X. Okay, so we have B between E between C. Therefore, we can find out B is equal to BC minus C. BC minus C. So let BE is equal to X. Therefore, we get that is C is equals to 6.4 minus X. We get that is C equal to 6.4 minus X because we consider that B equal to X. Let the equation from first. यहाँ पे हम लिख सकते हैं from equation first. अब आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है what is the length of segment B. तो यहाँ पर in triangle ABC, that is D parallel to AB, therefore we can write that is B upon C is equals to AD upon CD by BPT theorem. By BPT theorem. So now put up the values. X upon C 6.4 minus X is equal to AD equals to 5 and CD equals to 3. So by the cross multiply, now we get that is 3x is equal to 5 in bracket 6.4 minus x. तो यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. So 3x is equal to 5 into 6.4 that is equal to 32 minus 5x. तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. That is 3x plus 5x is equal to 32 because by changing the side of 5x it goes in the addition with the 3x. By transforming the terms in the either side of this equal to signs, then they will get change in their signs. तो यहाँ पर 5x का साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि उसे हमने इज इक्वल टू साइन के ये दूसरी बार हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया है. तो 3x plus 5x is equal to 32. It means 8x is equal to 32. So therefore we can find out that is x is equal to 32 upon 8. It is equal to 8 ones are 8, 8 fours are 32. So therefore we get BE is equal to 4. So this one is the problem number 7. तो ये रहा आपका प्रॉब्लम नंबर 7 जहां पे हमें BE फाइंड करना था. BC आपको दिया गया था. AD और DC की लेंथ भी आपको दी गई थी और B यहां पर हमने लेंथ फाइंड कर लिए. दैट इज B इक्वल टू 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाउ प्रॉब्लम नंबर 8. Okay.
Then now problem number 8. तो प्रॉब्लम नंबर 8 में आपको अगेन एक फिगर ड्रॉ करना है. Here is in figure we have the two different lines, but some segments are perpendicular to the line first, that is A, B, C, D, P, Q, R, S. So SD, RC, QB and PA are the segments which are perpendicular to the line AD, and we have to the lengths of AB, BC and CD. AB equals to that we have AB equal to 60, BC equal to 70 and CD equal to 80. So 80, 70 and 60. And whole PS that is given, whole PS equals to 280. Then according to the figure we have to find out the length of segment PQ, segment QR and segment SR. तो यहाँ पर पहले हम given लिखते हैं क्या क्या दिया है, that we have segment SB, segment RC, segment QB and segment PA perpendicular to line AD. तो आपको ये सब सेगमेंट लाइन AD को परपेंडिकुलर दिए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमें एक प्रॉपर्टी लगाना है, द सेगमेंट व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. आपको यहाँ पे नोटिस करना है segments which are perpendicular to each other are parallel to each other also. Perpendicular to the same line are parallel to each other. तो यहाँ पे आपको नोटिस करना है, अब आपको PQ, QR और RS की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, लेकिन इससे पहले हमें इनकी पैरेललनेस प्रूव करनी होगी. तो यहाँ पर हम बता सकते हैं और ये है हमारा गिवन नाउ. But we know lines perpendicular to the same line are parallel. तो यहां पे हमें मिलेगा therefore we get that is SD parallel to RC, RC parallel to QB and QB parallel to PA. All the lines are parallel to each other. So तो यहाँ पे ये सब लाइंस हमें पैरेलल मिले. तो अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस का यूज करके, हम इंटरसेक्ट्स की प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पे PQ, QR और RS फाइंड कर सकते हैं. तो वो कैसे फाइंड करेंगे पहले देखेंगे. नाउ बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस we can write that is PQ upon PS is equals to that is AB upon AD. Let the equation number first. यहाँ पे हमें बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस हमें मिला है PQ upon PS is equal to AB upon AD. बट यहाँ पे आपको सोचना है we have the length of segment AB, segment BC and segment CD. It means we don't have the length of AD actually, but we can find out by adding these three segments we can get the length of whole AD. So यहाँ पे हम पहले नोटिस करते हैं, but that is A between, B between, C between D. Therefore AD is equal to AB plus BC plus CD. So it is equal to AB 60, BC 70 plus CD 80, and the sum of all three that is 210. So AD is equal to 210. तो यहाँ पे हमें AD मिला है, that is AD equal to 210. अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में AD की जगह पुट कर सकते हैं. तो substituting values that we get, that is
we have to find out the PQ, but PS is given 280 is equal to AB is given 60 upon 4AD equal to 210. तो यहाँ पर हमने इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं, तो अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। therefore we can write PQ is equals to that is 280 into 60 divided by 210, so 0 0 cancel। अब हम यहाँ पे इसको और सॉल्व कर सकते हैं, that is 280 into 6 divided by 3 into 7, it means 3 7s are 21। now 3 1s are 3 2s are 7 1s are 7 4s are, that is 40, it is equal to 40 into 2, therefore we get PQ is equals to 80। so the first segment that we find now, that is QP or the PQ is equal to 80। तो पहले ये जो सेगमेंट है हमें फाइंड करना है, that is PQ equal to 80। अब आपको फाइंड करना है SR और QR। now next, now again by the property of three parallel lines, we get now SR upon PS is equals to CD upon AD। तो यहाँ पे आपको याद रखना है SR upon PS and CD upon AD is the ratio of the intercepts made by the three parallel lines on the two transversal, इसका हम यूज कर रहे हैं। तो फिर से अब SR upon PS 280 is equals to CD that is given 80 and AD 210, so 0 0 get cancels again we can multiply them, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इधर हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज PQ इक्वल टू 80 जैसे आया है वैसे ही हम SR की वैल्यू अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, बिकॉज हमने उस रेशियो में SR अपॉन PS इज इक्वल टू CD अपॉन AD में उनके वैल्यूज पुट अप कर दिए। तो अब आपको बस ऑपरेशन फॉलो करना है एंड देन वी गेट द लेंथ ऑफ SR2। नाउ therefore we can write SR is equal to, again by cross multiplying, SR is equal to 280 into 8 divided by 21। तो again we can split the 21 into the factors of 3 into 7, that is, but 280 into 8 divided by 3 into 7, तो again we can cancel 7 1s are 7 4s are, so it is equal to 40 into 8 4s are 32, 320 divided by 3, so therefore we have SR is equal to 320 divided by 3। तो आपको SR की वैल्यू मिली 320 divided by 3। now we have to find out the QR, but QR फाइंड करने के लिए पहले हमें QR की लेंथ फाइंड करनी होगी। इसका मतलब QR के बारे में हमें रेशियो फाइंड करना है, वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले QR कैसे आता है ये हम सोचेंगे। so QR is the subtraction of PS and the PS minus SR plus QP, यहाँ पे कर सकते हैं, that is we have now P between Q between R between S, therefore we can write QR is equals to PS minus PQ plus SR, PQ plus SR। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, that is we have the PS equal to 280 minus in bracket the value of PQ, that is just 80, plus but the value of SR, that is 320 by 3। now solve the bracket first by the Bottomless rule, that we get 280 minus 240 plus 320 divided by 3, the common denominator, by equaling the denominator of the both। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे 280 minus that is 560 by 3। so again now we have to subtract the two fractions, so it means once again we have to equalize the denominator here। तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं, तो फिर से यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम 3 से 280 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 300
3 8s are 24, so it is 4, 2 as a borrow, 3 2s are 6 and 2 8, 8 minus 560 divided by 3. So यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, that is QR is equals to 840 minus 560, that is again we get, that is subtraction 0, 14 minus 6 that is 8 and 7 minus 5 that is 2, 280 by 3. So this one is the value of QR, this is the value of SR and this is the value of PQ. तो ये तीनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिए हैं. PQ इक्वल टू आप यहां हम लिख सकते हैं that is 80, SR यहां पे हम लिख सकते हैं 320 by 3 and QR is equal to 280 by 3. तो ये रहा आपका प्रॉब्लम नंबर 8. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 9. अब क्वेश्चन नंबर 9. आपको मैं बता दूं कि इस सेशन का ये आखिरी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग 3 प्रॉब्लम्स है इसी प्रॉब्लम सेट के वो हम आगे के सेशन में ले लेंगे. लेकिन अब प्रॉब्लम नंबर 9. तो प्रॉब्लम नंबर 9 में अगेन हमें एक फिगर ड्रॉ करनी है ट्रायंगल की, दैट इज we have the triangle PQR, and in triangle PQR PM is the median of triangle PQR. It means we get QM congruent to RM, QM congruent to RM. Next, the bisectors of angle PMQ and angle PMR intersect the sides PQ and PR at point X and Y. X and Y. Then we have to show that segment XY is parallel to QR. तो फिर से एक बार क्वेश्चन दोहराता हूं. यहाँ पे in triangle PQR, M is the midpoint of QR. It means PM is the median. Next, the angle bisectors of angle PMQ and angle PMR intersect the side PQ and side PR at point X and Y respectively. They show that is, और आपको कहा है show that XY parallel to QR. तो आपको शो करना है XY is parallel to QR. तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि QR XY parallel to QR आपको अगर दिखाना है तो आपको कॉन्वर्स ऑफ BPT का यूज करना होगा. बट द कॉन्वर्स ऑफ BPT हमें मालूम है, if the 2 points on 2 sides of a triangle are aligned divides 2 sides of a triangle in the equal proportion, then that line is parallel to the third side of a triangle. ये कॉन्वर्स हमने देख लिया था. तो इसका मतलब ये है XY parallel to QR अगर आपको दिखाना है तो पहले आपको ये प्रूव करना होगा Px upon Qx is equal to Py upon Ry. तो ये प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे, बिकॉज median PM divides triangle PQR into the two another triangles, that is triangle PQM and triangle PMR. So in triangle PQM we can say that is QM MX is the bisector, therefore we get PX upon QX is equal to that is PM upon QM. Let's take the equation first. Second, similarly in triangle PMR, MY is the bisector of angle PMR, therefore we get
py upon ry is equal to pm upon mr. Equation number 2 by the same angle bisector property. But pm upon qm is equal to pm upon mr because qm equal to mr. Equation number 3. अब स्टेटमेंट थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड से हमें ये पता चलता है that is px upon qx is equal to py upon ry, but it means that is by the converse of bpt we get xy parallel to qr. तो यहां पर प्रूव करते हैं पहले सॉल्यूशन, that is in triangle, first one, in triangle PQM, ray MX is bisector of angle PMQ. Therefore, we can write that is PX upon QX is equal to PM upon QM by property of angle bisector. Property of angle bisector. Let the equation first. Now in triangle PMR, ray MY is bisector of angle PMR. Of angle PMR. That's why again therefore we get that is PY upon ry is equal to PM upon mr. Again by property of angle bisector. Property of angle bisector और property of angle bisector हमने ये लिखी थी, the angle bisector divides the side opposite to it in the equal proportion to the remaining two sides of a triangle. इसका मतलब ये होता है कि ट्रायंगल के किसी भी एंगल का बाइसेक्टर उसकी अपोजिट साइड को दूसरे दो साइड के इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है. तो यहाँ पे हमने लिखा है py upon ry equal to pm upon mr. Let the equation number 2. But we have pm upon qm is equals to that is pm upon mr. Since why? Since qm equals to mr. And why qm equals to mr? Because m is the midpoint of qr. So let the equation number third. Therefore, from 1, 2 and 3, from equation first, second and third, we can write that is px upon qx is equal to that is py upon ry. But this is the proportion or the ratio of two sides divided of triangles PQR in the ratio px upon qx and py upon ry. That's why therefore by converse of BPT theorem that we get line xy is parallel to side QR. Hence it is proved. तो ये रहे आपका प्रॉब्लम नंबर 7, 8 एंड 9. जो अब बाकी के 3 प्रॉब्लम्स है वो हम अगले सेशन में देख लेंगे. ठीक है, थैंक यू.